is my great pleasure and privilege to welcome each one of you present here to this seminar on venture capital funding, opportunity for early stage entrepreneurs. I acknowledge the presence of our esteemed resource person, Advocate Ekant Agarwal, fellow colleagues and dear students. I take honor to introduce the speaker of today's multidisciplinary webinar. Advocate Ekant Agarwal is an experienced and a seasoned professional with a Bachelor's of Commerce, Bachelor of Laws and Masters of Business Administration to his credit. He has the rich experience of more than 15 years in the legal and startup domain. He is the proud owner of law and startup consultation firm with the name of Ekant Associates, which has its presence not only in India but in Canada too. He is the founder and CEO of Consortium of Business Mentors and Advisors, CBMA, which is operational in the sector of education. He was instrumental in opening and running of the first 5 startup incubators in the state of Haryana in association with Department of Higher Education at Panchkula, Karnal, Hisar, Faridabad and Gurugram. Adding to it, he is a proficient advocate, motivator and a distinct speaker. He has an honor of getting awarded more than 50 times for his contribution towards the growth of society and the world at large. Though the list of awards is very long, but still I would like to take a privilege to make a mention of few awards here. He was awarded twice by Ministry of Human Resource Development for appreciation on contributions to the Innovation Cell. He was given the Certificate of Appreciation by the Government of Punjab for supporting Startup India Punjab Yatra. He was given an award at Skills, honored for being a jury member at B-Starters Entrepreneurship Competition by Chandigarh Business School. He was awarded thrice by the University of Fraser Valley, Canada for his excellence and remarkable guidance and support to the students. He was awarded by Indian School of Business Mohali campus by Z Nation Labs Mumbai for being a panelist at their entrepreneurship event Coach. And the list goes on. So before I request the organizing secretary of this session, Dr. Tarundeep Kaur, to give him a green floral welcome. Tarun ma'am. And formally welcome him as well. Thank you to each and every one of you being here with us today. I'm more grateful to stand here and welcome you all to this lecture on investment funding opportunities for early stage entrepreneurship. On behalf of GGDST College, our principal Dr. Ajay Sharma and the management and our members of IIC, our college would extend a warm welcome to Advocate Ekant Agarwal. Sir, I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome you today. Children are the future of tomorrow. All these students we witness today will grow up to be the responsible citizens of tomorrow. I'm surely they will learn a lot from your experiences and grow up to make us proud by achieving the highest human value. Now, without wasting any time further, I will request Mr. Ekant Agarwal to take the time. Thanks a lot for the elaborative description. Otherwise, I'm just a human being, a student like you. I would like to learn from you all. Thank you to ST College, thank you to the organizers. So maybe we can start with the session? Yes, sir. Everybody is ready? Yes. Had the breakfast also? Yes. Good, nice. Yes, before we start, so Hindi, English, Punjabi तीनों चलेगा? Yes. एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, I was also part of this college only. 17 साल पहले मैंने भी B.Com यहीं से करी. So isn't it great? I'm part of you only. I'm feeling very proud to be here. मेरी कॉलेज में आज मुझे ही मौका मिला कि I can address you all. So there is one quote which will give you a way for the life. I follow it. Maybe you can also. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. अब इसका मतलब क्या है? Let's go by the meaning. So this quote is not mine. This is of Swami Vivekanand ji. So what it says, arise. हम सारे सुबह उठे थे, basically जागे थे, ठीक है. उसके बाद awake,
हम अवेकन हुए या नहीं हुए, दैट इज द मेन थिंग। उठते हम सारे हैं लेकिन हम जागरूक नहीं हैं। वंस वी आर अवेकन, लाइफ में हमने करना क्या है, हमारा गोल क्या है, मे बी शॉर्ट टर्म आज का गोल, मे बी लॉन्ग टर्म साल का गोल, मे बी मोर लॉन्ग टर्म दैट इज योर डिग्री 5 years 10 years, that is your goal. And once you know your goal, stop not till it is reached. ठीक है? So next time से जो भी आपका गोल होगा, जब सुबह उठोगे अपने आप को अपना गोल याद कराओगे, अपने आप को जाग करोगे कि मैं जाग गया हूँ, ये मेरा गोल है, फिर नहीं रुकना। Done? Great. Just sharing with you, like my goal is to get 100 awards in this lifetime only. 56 I have reached, 44 I'll get, I know. So वो रोज सुबह मैं अपने आप को याद करता हूँ। Same goes for business. So जैसे मैं अपने गोल पे लगा हूँ, आपने अपने गोल पे लगा है। कोई स्टार्टअप है, कोई प्रोफेशन है, कुछ है, रोज सुबह याद कराओगे अपने आप को। आपके पास 12 थॉट्स होती है। So if you listen to biggest of the founders, there are only 12 thoughts which you can work in the entire day. उसमें से पहले हम वेस्ट कर देते हैं ऑन द मोबाइल फ़ोन। उठते हैं, उठते मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं, उसमें 5-6 थॉट्स और होती हैं, मैसेजेस होते हैं, हमारी थॉट्स गई एंड डे इज रुइंड। सो बेटर इट इज फोकस ऑन द गोल। सो आवर टॉपिक इज फंडिंग, विल डिस्कस अबाउट फंडिंग। पहले मुझे आप बताओ, एंटरप्रेन्योरशिप एवरीबडी नोज, सबको पता है? देयर हैव बीन सेशंस आल्सो ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। यस सर, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है, और आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ एसडी का। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज डन, इंक्यूबेटर्स डन, बिजनेस स्टार्टअप जनरल डेफिनेशंस पता ना, वो तो नहीं बतानी। चलो फंडिंग पे चलते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आर यू रेडी टू टेक एक्सटर्नल फंडिंग? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। आर यू रेडी? हमारे दिमाग में क्या होता है एज ए स्टूडेंट और एज अ नेसेंट स्टार्टअप कि फंड्स अवेलेबल है, सबसे पहले हम फंड्स ले लेते हैं, स्टार्टअप बाद में करेंगे, या ये आइडिया है उस पर मुझे पैसा मिल जाएगा। नहीं, आई एम हियर ऑन द राइट टाइम टू टेल यू ऐसा नहीं होता। सिंपल, अपने आप से क्वेश्चन पूछना, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा है, आप मेरे पास एक आइडिया लेके आए कि इस आइडिया में सर आप इन्वेस्ट कर दो, मैं सोने में क्यों ना लगाऊँ, मैं स्टॉक मार्केट में क्यों ना लगाऊँ, मैं प्रॉपर्टी में क्यों ना लगाऊँ, मैं एक रिस्क में, एक सिर्फ आइडिया में क्यों लगाऊंगा पैसा? सोचो। आंसर मिला? मैं बताता हूँ आपको आंसर। सी, एनी इन्वेस्टर वांट्स मैक्सिमम रिटर्न्स। जब तक उसको उसका पैसा 1 लाख से 20 लाख नहीं हो रहा, वो पैसा नहीं लगाएगा। रिमेंबर दिस। सो व्हेन यू आर आइंग फॉर फंडिंग, आप अपना स्टार्टअप वहां पे लेके जा चुके हो कि आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप उसको दे सकते हो 20%। गेटिंग इट? राइट? सो दैट इज द ट्रूथ। मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है? फंडिंग लो, स्टार्टअप करो। स्टार्टअप बनाया, आइडिया लिया, फंडिंग ले ली। नहीं, प्लीज बी क्लियर, दिस इज नॉट द रियलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। इमेज देख पा रहे हो? सो व्हाट आर दे डूइंग? ये सूप बना रहे हैं सारे मिलके, ठीक है, लेकिन सूप सारा इन्होंने नीचे गिर दिया। व्हाट इज द रीजन? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू एंड देन वी से कि फंडिंग नहीं मिल रही है, क्या होगा, राइट? सो वी ट्राई टू मेक आवर स्टार्टअप विद 2, 3, 4 फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। ये हम चारों मिलके काम करेंगे। कभी भी फंडिंग उस स्टार्टअप को नहीं मिलती जहां पे 3 से ज्यादा फाउंडर्स हों, बिकॉज टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी सूप। जो आपका स्टार्टअप का सूप है उसको वो खराब कर देंगे। सबके अलग अलग माइंड, सबके अलग अलग थॉट्स। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव 2 फाउंडर्स। 2 को फाउंडर्स होंगे और सोलो को भी नहीं मिलती फंडिंग। मैं आज सिर्फ स्ट्रिक्टली फंडिंग पे बात करूंगा, बेसिक्स के लिए आप जब मर्जी मुझे कंटैक्ट कर लेना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फंडिंग। याद रखना, कंपनी बनाओगे, सोलो नहीं बनानी, 2 बंदे हो गए। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बहुत पुरानी कहावत है, वो फंडिंग में भी है, आज भी एप्लीकेबल है। 2 रखना। तीसरा डालोगे टीम में डालना कि दिस इज योर टीम, दिस इज योर CEO,
गूगल का CEO कौन है? Yes, you all know it. So he is a paid employee, right? He's not a director to the company of Google. Same for you. Same for you. Try to learn from them. So, दो founders हैं. Clear? Next चलूँ? और जहाँ भी सोने वाले होंगे मुझे बता देना. Because मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, बड़ी जल्दी सो जाते हैं. Coming to the next slide. So, analysis of the market, or maybe your idea is very good, but is the market ready? That's the second thing before you go for investment, before you go for funding. Simple example. COVID में आपको पता है कि मार्केट, जो प्रॉपर्टी मार्केट थी, I was talking to a builder here now, काफ़ी गिर गई थी, right? So there was a startup who was making a product just like magic bricks कि हम सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट करेंगे, उसको बेचेंगे. He goes to a fund. मुझे फंडिंग चाहिए अपने प्रॉपर्टी बिजनेस में. The fund simply says market खुद ही डाउन है, we cannot invest in it. Right? Product was very good, but was the market ready? No. अरे जागो यार, थोड़ा जोश दिखाओ. No. No. So market was not ready. Same goes for you. Any idea, whichever you are thinking of, is the market ready? ये आपने अपने आप से मार्केट से R&D से सवाल करना है, ठीक है? Major of the startups, what are they doing? They are into IT. हम IT का प्रोडक्ट बनाएंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, हम मोबाइल की एप्लीकेशन बनाएंगे, और इंटीग्रेशन में, जैसे कि हम सलून्स को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? हम कॉलेज की लॉन्ड्री को इंटीग्रेट कर देंगे, एक ऐप के थ्रू बच्चे हमें कपड़े देंगे. यही सारा सोच रहे हो? यही आइडियाज मैक्सिमम फ्लोट करते हैं. But is the market ready? Do people really need it? Investor को वो पता है. Investor is somebody who is going to give you funds only if the market is ready. Right? So second question, remember it? Is the market ready? Then, before this, I have something for you. मुझे पता आप सो गए हो सारे. So, in startups, in entrepreneurship world, in funding, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है. आउट ऑफ द बॉक्स टोटली. आई विल गिव यू अ स्मॉल गेम. जो उसको पूरा करने का विल गेट अ चॉकलेट फ्रॉम यू. राइट? कैन यू ड्रॉ अ स्क्वायर विद 3 लाइन्स? राइट? आई गिव यू अ मिनट. कैन यू ड्रॉ अ स्क्वायर विद 3 लाइन्स? Whosoever does it will get a chocolate. Can you do it? Yes, I have my chocolates. आ जाओ आप, बनाओ. नहीं, कोई और ट्राई करो. Please. So do we have a whiteboard or a copy? A square with 3 lines. Very simple. पहले बता रहा हूँ, क्रिएटिव रहना है स्टार्टअप्स में. मार्कर देना. Yes, yes. Take a marker, please. So can I have a marker? Square with 3 lines. Screen. So I repeat, square with 3 lines. इस पर लिखना. Nice try. Can we clap? कोई और ट्राई करना चाहता है? A square with 3 lines. सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. बहुत इजी है. Great try, sir. Can we clap for the sir also? Very simple. ये एक्टिविटी बताता हूँ, चॉकलेट मैं ही लेके जाऊँगा. Thank you. So, what I said, square with 3 lines. देखना. क्या ये? How is his life? How is his startups? That is the only thing to be done. A square with 3 lines. Simple. इसी तरह. Now, I won't say anything bad to the college because I watch our product. But
A फॉर एप्पल की जगह A फॉर एप्रिकॉट भी होता है, B फॉर बॉल की जगह B फॉर बॉय भी होता है, C फॉर कैट की जगह कुछ और भी हो सकता है. थिंक दैट वेज. ठीक है. दिस इज हाउ स्टार्टअप्स वर्क, दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क. जहाँ पे नॉर्मल सोच बंद हो जाएगी ना, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सोचेगा. समझ गए हो? अभी रिसेंटली एक मशीन आई है, एक स्टार्टअप ने बनाई है केरला में, डोसा मशीन. जस्ट लाइक अ प्रिंटर, यू गिव अ कमांड एंड द डोसा इज आउट. किसी ने नहीं सोचा होगा. रोटी मशीन इज ऑलरेडी वर्किंग इन सिंगापुर फ्रॉम लास्ट 2 years. You just have to add आटा, वाटर एंड प्रेस किया, थिकनेस डाली एंड यू हैव द चपातीज. दे आर नॉट मेकिंग इन इंडिया बिकॉज कॉपी हो जाएगी. राइट? सेम इज लाइफ, सेम इज दैट एग्जाम्पल. चॉकलेट इज माइन. थैंक यू. चलो अगले चलते हैं. तो अब आप जाते पर्सनल फाइनेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्टर. सर इज इन्वेस्टर सिटिंग है, राइट? हम एक आइडिया लेके गए हैं कि सर हमारे स्टार्टअप में, हमें बिजनेस में पैसा चाहिए. ठीक है. उनका पहला सवाल क्या होगा आपसे? डू यू हैव योर रन अवे ऑफ 9 to 12 months? आपके पास अपना पैसा है कि आप 9 से 12 महीने एग्जिस्ट कर जाओगे? वो पहला सवाल है. अगर आपके पास वो पैसा नहीं है, डू अ जॉब, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अपना 9 से 12 महीने का पहले पैसा जमा कर लेना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती. हम कहते हैं स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, लोग हमारी बात नहीं सुनते, प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं दिया हमें. नहीं, ऑल आर एक्सक्यूजेस. दिस इज व्हाट टू डू. हैव योर फिनेंसेस गुड फॉर 9 to 12 months. अगर आपके पास होंगे, इन्वेस्टर को पता है इसका स्टार्टअप मरने नहीं वाला, मेरा पैसा मरने नहीं वाला. ठीक है. सेकेंड, इज योर लाइफ इंश्योर्ड? अगर आपकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, पैसा लगता है आप में. आइडिया कम्स सेकेंड. आपका पैशन, आपको देख के पैसा लगेगा. अगर आप ही की लाइफ इंश्योर्ड नहीं है तो उसका पैसा तो इंश्योर्ड है ही. जिस स्टार्टअप में फाउंडर लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको फटाफट फंडिंग मिलती है. सो आई एम गिविंग यू द सीक्रेट्स ऑफ फंडिंग. ये आपको कोई नहीं बताएगा, इन्वेस्टर खुद भी नहीं बताएगा और चुपचाप देखेगा ये चीज़ें हैं कि नहीं. देन एक्सपेंसेस, ये आपको अपने अकाउंट्स बनाने फॉर द स्टार्टअप. यू हैव टू मेक योर अकाउंट्स वेन यू विल हैव द पास्ट एक्सपेंसेस ऑफ योर स्टार्टअप, जो आपने पैसा लगाया आज तक, जैसे वो आइडिया खड़ा हुआ, ट्रैक्शन आई, एंड द फ्यूचर. 1 year प्लान फॉर द फ्यूचर. आप पैसों के साथ करोगे क्या, जो आपको चाहिए और जो आपके पास है. राइट? देन आर यू डेट फ्री? और डेट फ्री का मतलब क्या हुआ? या हैव यू क्लियर योर ओन डेट्स? मीनिंग देयर बाय यू हैव अ फ्लैशी कार बट इट इज ऑन लोन, 80% लोन पे. आपको अभी तो उसका लोन चुकाना है. यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास स्टूडेंट लोन था, आप तो अभी तो उसका लोन चुकाना है, उसको फंडिंग नहीं मिलेगी. हो सकता है आप फंड लो, पहले अपना पुराना लोन चुकाओ, मोस्ट लाइकली. राइट? सो यू शुड बी डेट फ्री ऑल्सो. और दिस इज आई ओपनर बट येस इट इज. इसीलिए आई टेल यू, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क एज वेल. हमारे पास हर महीने पिचिंग सेशन चलता है, 100 से ज़्यादा एंट्रीज आती हैं और फंडिंग कभी कभी 3-3 महीने में सिर्फ एक स्टार्टअप हो जाती है. रीजंस आर दीज. लोग सोचते हैं हम फंडिंग ले लेंगे, खुद अभी लोन में है, नहीं मिलेगा यार उसको. बी क्लियर. देन स्किन इन द गेम, दैट इज योर पर्सनल मनी. आपने अपना पैसा कितना लगाया उसमें. अगर यू आर थिंकिंग कि यू विल जस्ट टेक द इन्वेस्टर्स मनी एंड यू डू नॉट हैव योर स्किन इन द गेम, व्हाई विल दे इन्वेस्ट? You are taking only risk of their money, not of your money. So they will look for that also. और जिसकी 50% तक अपनी मनी है, बूटस्ट्रैप किया हुआ, फंडिंग बहुत जरूरी होती है. Then is your sweat equity. What do you mean by that? That is your time. आपने अपने स्टार्टअप में, उसकी R&D में, उसको खड़ा करने में टाइम कितना लगा, राइट? काफ़ी बार क्या होता है, so we keep on getting queries. फोन आएगा, सर मेरे पास आइडिया, आप पैसे लगाओगे? ऐसे नहीं होता. यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, यू हैव टू डू R&D, यू हैव टू मेक प्रोडक्ट, यू हैव टू मेक MVP, प्रोटोटाइप बनेगा, आपका लॉन्च होगा, ट्रैक्शन आएगी, क्लाइंट्स आएंगे, देन इन्वेस्टमेंट. अभी नहीं. सो रिमेंबर, आपकी जी जान की मेहनत जिसको बोलते हैं ना, until it is there, that means your sweat equity. Nothing is going to happen, nobody is going to give you investment. Then, lastly, what is family income? And what is the difference between this skin and the game?
सो फैमिली इनकम इज आपके पेरेंट्स, चाचा ताया दादा, उन्होंने पैसे दिए स्टार्टअप के लिए, उसका दर्द नहीं होता। ये सच बात है, उसका दर्द नहीं होता। इसलिए फैमिली इनकम जब आप इन्वेस्टमेंट मांगने जा रहे हो शुड बी 10%। दैट शुड बी योर मनी। आपने हॉबी करके कमाई, आपने ट्यूशन्स पढ़ा के कमाई, आपने जॉब करके कमाई, लेकिन आपकी अपनी में आपने बूटस्ट्रैप कहाँ से किया? राइट? इज इट ओके? सोए तो नहीं हो? सो गए बता देना, चॉकलेट बहुत है मेरे पास, ठीक है? जैसे ही सो जाओ बता देना। नाउ नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, आर यू रेडी टू लूज कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस? पिछले वाला हमने सारा कुछ कर लिया, पर्सनल मनी भी मैनेज हो गई, स्वेट इक्विटी भी आ गई, टाइम भी आ गया, सब कुछ आ गया। नाउ आर यू रेडी कि ब्रेन आपकी, आइडिया आपका, स्टार्टअप आपका है, कंट्रोल कोई और करेगा? क्योंकि जिसने पैसा लगाया ना वो डेली आपको पूछेगा मेरे पैसे का क्या बना। ऐसे नहीं छोड़ेगा कि पैसा दे दिया अब आप जो मर्जी करो, नहीं। 40% इक्विटी आपकी खरीदेगा कंपनी की, सिर्फ 60 आपके पास है। एंड एग्जिट इज फ्रॉम 2 to 5 years। 2 से 5 साल आपका ब्रेन वही चलाएगा। आप सबने कोर्ट नहीं देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट्स में जब हम स्टार्टिंग में गए थे आज से 14 साल पहले, वहाँ पर एक रूम होता है, कैरम रूम। कैरम रूम में आप कैरम खेल रहे हो या चेस खेल रहे हो, दो ही चीज़ें होती है। चेस खेलते खेलते ना एक सीनियर आके बैठेगा, बोलेगा नहीं नहीं अदा नहीं अदा चल, आप चल रहे होंगे। दूसरे वाले की तरफ भी एक सीनियर आके बैठ जाएगा, नहीं 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 अदा चल। थोड़ी देर में आप देखोगे आप तो चेस खेल ही नहीं रहे, वो दोनों सीनियर्स खेल रहे हैं। सो दैट इज ट्रूथ हेयर ऑल्सो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका स्टार्टअप हाईजैक हो जाएगा। क्यों? आपने पैसा लिया होगा, आप प्रेशर के अंदर होगे। बेटर टू बूटस्ट्रैप, बट यस इफ यू आर रेडी टू लूज कंट्रोल देन टेक इन्वेस्टमेंट, राइट? 40% जाएगा ना। ये आपने टर्म सबने सुनी होगी, यूएसपी, यूवीपी या वैल्यू। सो सी अगेन सेइंग दैट ओनली, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट, व्हाई नॉट इन प्रॉपर्टी? What is the value on the table you are offering? Is it cash flows? Is it your burnout rate? क्या चीज़ है जो आप टेबल पे ला रहे हो कि पैसा दिया जाए? Right? Getting my point? Yes. So unique, बोलो, selling proposition, और UVP, value proposition. And value है। So talking about value or USP or UVP, what is value basically? कोई भी मुझे आंसर दे सकता है कि वैल्यू क्या है? हम क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? Are we making some difference? Is it worth some money or it is an NGO? So that is value. दिमाग में रखना, हम टेबल पे क्या वैल्यू लेके आए उसके लिए कि वो हमें पैसा दे। That should be there. If there is something unique in your business, in you, which you are selling, that will be the value. वो किसी और के पास नहीं हमारे पास। चलो। Before this, another question to you. याद रखना, A for apple नहीं होता, ठीक है? सवाल दोबारा, और इस बार आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, आंसर शीट भी दूंगा, चीटिंग करके आंसर लेके आने हैं। डन? कर लोगे? चलो, वेरी सिंपल। गिव मी 8 बॉडी पार्ट्स विथ 3 letter words. 1 मिनट का टाइम है। वन इज आई, EYE. 8 बॉडी पार्ट्स विथ 3 letter words. एक बचा दो, कोई भी जिसको 8 आते हैं, कॉन्फिडेंट। 8. और वी कैन हैव अ पेज एटलीस्ट। पेज पे लिखते हैं, आप पेज पे लिख लो, मोबाइल में नोट कर लो, नॉट प्रॉब्लम। और मेरे पास आ जाओ, ग्रैब योर चॉकलेट। आपकी बॉडीज आपके पास है, चीटिंग कर सकते हो। थ्री लेटर, जस्ट लाइक आई, ईयर। 2 मैंने आपको बता दिए, 6 रह गए। कम ऑन, बी फास्ट। Anybody with 8? Come on.
20 seconds gone. Fast, fast. You can attempt it. I know you have your bodies with you. You can cheat. Please, there's a hand. Ajo, 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 aage ajo. Not a problem. The stage is only 8 inches. Ajo. Please come. आपके रूम से ही एंटरप्रेन्योर्स ने निकलना है और आज ही चांस है जो मेरे पास आ जाएगा सोचो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा आ जाओ कम He has you. Off the chocolate shake and put Great night. Very nice. ये रीड भी करेंगे हम अभी. So guys, it's very easy, very easy. Please take your chocolate, guys. ऐसे ना जाओ. Come. All the three. Oh. Congratulations. Nice. It is not about the chocolate, it is about the attempt. So this is what we call as risk taking. जब हम स्टूडेंट होते हैं ना थोड़ा सा स्टेज से घबराते हैं होता कुछ भी नहीं है इट इज जस्ट अ फियर ऑफ कि बाकी हमें देख रहे हैं नॉट टू वरी सो बीइंग एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग सबसे बड़ी चीज़ है टेक रिस्क एंड यू विल विन चॉकलेट्स समझ लो बहुत कुछ जीतो लाइफ में सो क्या क्या बोला था किसी ने आर्म ईयर जॉ हिप टो आई लिप रिप कोई और ग्रेट leg, toe. So there are good 10 body parts with 3 letter words. Again, चलो वापस आते हैं टॉपिक पे. I am remaining with 1 chocolate only. तो एक ही एक्टिविटी और करेंगे. So now the investment experience. अब हम बाकी सारा कुछ कर चुके हैं. ठीक है? Here we go to an investor. हमने finances मैनेज कर दिए. हमने सोच लिया कि कंट्रोल भी थोड़ा सा दे देंगे. हमने हर चीज़ सोच ली. क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है आप इमेज देख पा रहे हो सारे सो दीज आर 5 इन्वेस्टर्स इन सब के पास पैसे हैं आपको देने के लिए अब आप अपनी बकेट लेके गए हो कि इसमें पैसे डालो ठीक है सो डू नॉट गो टू अ सिंगल फंड एक सिंगल फंड के पास नहीं जाना एक्सपीरियंस लेना है एक फंड के पास जाओ उससे अपनी वैल्यूएशन कराओ देखो कि कितना पैसा वो दे रहा है नेक्स्ट के पास जाओ वो कितना पैसा दे रहा है तीसरे के पास जाओ वो कितना पैसा दे रहा है और ध्यान कहाँ पे देना है पैसे पे नहीं नो पैसा तीनों दे रहे हैं हमें ध्यान देना है उनके क्वेश्चंस राइट क्वेश्चंस आस्क्ड आर दोज एरियाज व्हिच इन्वेस्टर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑलराइट मुझे भी बता देना क्या इंपॉर्टेंट है सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस व्हिच इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू आस्क वो वही क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप लैक कर रहे हो आपका स्टार्टअप थोड़ा सा कम है इन्वेस्टर वहीं पे ध्यान देगा हमेशा हो सकता है आपकी फाइनेंशियल शीट मांगे हो सकता है आपकी प्रोजेक्शंस मांगे हो सकता है आइडिया का कंसेप्ट मांगे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मांगे दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दैट पहले इन्वेस्टर के पास गए थे जो उसने सवाल पूछे वो हम सारे ठीक कर लेंगे फिर दूसरे के पास जाएंगे आपकी फंडिंग अपने आप बढ़ राइट दिस इज टू बी डन देन What are the types of funding? सबसे पहले आप आइडिया स्टेज पे हैं अभी आप आइडिया बना लिया आपने बहुत अच्छा आइडिया बना लिया नेक्स्ट आप क्या करोगे पहले तो आइडिया को पेटेंट कराओ इफ इट इज अ टेक्नोलॉजी गेट इट पेटेंटेड इट इज वेरी लाइकली कि वो चोरी हो सकती है बच्चे आपने मेरे पास आना है हाँ जी आपने मुझे भी बताना कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस सेशन से अलावा
राइट? आई कैन सी यू ऑल. कुछ भी उससे इंपॉर्टेंट हो आप बाहर भी जा सकते हैं, नहीं तो मेरे पास आके हम सबसे शेयर करेंगे. डन? क्लियर? 12 बजे चले जाऊंगा. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया स्टेज. आपके पास एक आइडिया है, हमने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाया, MVP बनाया, प्रोटोटाइप बनाया. बनाने के बाद आप इन्वेस्टमेंट वाले के पास जाओगे कि मुझे सीड इन्वेस्टमेंट चाहिए. सो आई बी टॉकिंग अबाउट द फंड्स ऑल्सो कि किस तरह के होते हैं. फर्स्ट इज बूटस्ट्रैपिंग. आपने अपना पैसा अपने आइडिया में लगाया. नेक्स्ट, नाउ कम्स द को-फाउंडर स्टेज. यू हैव द आइडिया, यू आर देयर. अब आप अपना फाउंडर ढूंढ रहे हो. आपने एक फाउंडर ले लिया, उसका एग्रीमेंट बनाओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप स्टार्टअप करोगे, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ को-फाउंडर्स एग्रीमेंट. देन फैमिली एंड फ्रेंड्स. जो 10% हमने पैसा लेना है, go to family and friends. Then comes the seed round. अब seed पे आओगे, फिर angel investors. Angel investors जानते हो सारे? Let me tell you. जो छोटा फंड हम उठाते हैं, up to 2 CR, that is in angel investment. इसकी बहुत सारी फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं. I'll give you the names also. चंडीगढ़ में भी बहुत एक्टिव है. I'll give you the names. When moving above 2 CR, हमें 10 चाहिए, 100 करोड़ चाहिए. वी आर नेक्स्ट ओयो, वी आर नेक्स्ट उबर, विल गो टू वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है, दैट इज द हायर. देन वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको सीरीज ए फंडिंग दे दी. सीरीज ए पे आपकी वैल्यूएशन होगी सीरीज बी, देन सीरीज सी. दिस इज हाउ फंडिंग वर्ल्ड ऑपरेट्स. इट्स वेरी डीप, उसमें नहीं जा रहा हूँ. अभी पीछे एक IPO आया था जो फेल हुआ था, पेटीएम. सो लास्ट स्टेज इज IPO. आपका स्टेज जब स्टार्टअप का सीरीज सी तक खत्म हो जाएगा, देन यू विल लॉन्च IPO एंड यू विल हैव फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. नायका का IPO आया था, इट वेंट वे अहेड. नाउ टाइप्स ऑफ फंड. अब ये आपने देखना है आपके स्टार्टअप को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कम, ज़्यादा, उससे ज़्यादा, वो आपने देखना है. टाइप्स ऑफ फंड में सबसे पहले आ गया आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली. There is another word which I have not written here. We call it FNF. Those are fools. Those who believe in you and give you money like that only. वो लोग भी होते हैं, उनको ढूंढो, पैसा देंगे. So friends and family, then fools, then private finance. Those investors are the people who will give you money on your idea, on your value, on you after taking a collateral. आपकी गाड़ी के RC रख लेंगे, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लेंगे, आपको 3%, 4% पर मंथ पे देंगे, पर मंथ, समझ रहे हो? यानी कि 48% ईयर का इंटरेस्ट. दोज आर प्राइवेट फाइनेंसर्स. उनके चक्कर में नहीं आना, नहीं तो वो प्रॉपर्टी जाएगी ही जाएगी. देन सोल इन्वेस्टर्स. सोल इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन टू स्टार्टअप्स बाय बाइंग द इक्विटी एंड बिकमिंग द CTO और द को-फाउंडर. वो भी है. दो आर गुड पीपल. उनके साथ आप टर्म शीट साइन करोगे, एग्जिट साइन करोगे कि 2 साल में आप एग्जिट करोगे, इतना पैसा दोगे. देन इज बैंक लोन. बैंक लोन इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. आपके दिमाग में हमेशा रहता मुझे पैसा वापस करना है, बैंक से लिया हुआ है, इतने सारे कागज साइन किए हुए हैं, आप अच्छा काम करोगे और वापस दोगे. इसमें देयर आर मुद्रा लोन्स फॉर स्टार्टअप्स. रिमेंबर द नेम्स. किशोर, तरुण, ये आपके लिए मुद्रा लोन्स है. वेरी इजी टू गेट. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में जाना है, आइडिया देना है, आपको मिलेगा. एंड दिस इज कोलेटरल फ्री. 50,000, 5 lakhs and 10 lakhs. 3 तरह के लोन है, मुद्रा लोन्स. देन इज गवर्नमेंट ग्रांट. सो टुडे इटसेल्फ इफ यू कैन डू, स्टार्टअप इंडिया पे जाओ, अपने आप को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करो. ठीक है, यू विल स्टार्ट गेटिंग द ईमेल्स. उसमें दे हैव गवर्नमेंट ग्रांट्स. वो किसी ना किसी सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए आपको ग्रांट दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बनाओ, हमारे पास आके पैसा. हो सकता है आपका प्रोडक्ट मैच करता हो. सो स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे ज़रूर जाओ, देखो कि क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या चीज़ मार्केट में, क्या गवर्नमेंट चाहती है, वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा. और ग्रांट और लोन में फ़र्क है, ग्रांट वापस नहीं करेंगे. देन incubators and accelerators, you had a program I guess 2 days back also. So they are the people who will accelerate you. They have fund. MSME incubators के पास हर स्टार्टअप के लिए 15 लाख रुपया है. आई फॉर दैट. अटल इंक्यूबेटर्स के पास पैसा है आपको देने के लिए, गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है. सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इंक्यूबेटर इन ISP. बी अ पार्ट, फंड लो, अपना स्टार्टअप करो. देन एंजल इन्वेस्टमेंट्स. These are those people
who are angel investors. ये बड़े बड़े फंड बने हुए हैं, इन्वेस्टर्स इकट्ठे आए हुए हैं. जैसे चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क, we are 40 investors. Initially, now we are 100. We do due diligence. स्टार्टअप में जान है, करेगा, हमें रिटर्न देगा. सबने 1-1 लाख भी डाला तो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया ना? That is the beauty of angel fund. So that is angel investment. Then is VC, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें. And is IP. Active funds, for your knowledge, in Chandigarh. So this is TCHI, that is Thai Chandigarh Angel Investment. It is going to be very active in coming months. इसमें सारे Thai के members, only charter members, there are 2 type of members. So not going into details. Only charter members will be investing in your startups, right? Then is Punjab Angel Network, another very good fund in Mohali. Chandigarh Angel Network, as the name suggests, is Chandigarh. रेन इज राजस्थान एंजल इन्वेस्टर्स नेटवर्क. ब्यूटीफुल, आपको ड्यू डिलीजेंस ऐसी देंगे, नेक्स्ट एंजल के पास जाओगे आपको कि यार बहुत सब मजा आ गया. सो रेन इज ऑल्सो गुड टू गो. वेंचर कैटलिस्ट इज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे फंड्स को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है. सो यू कैन गो टू देम. लेट्स वेंचर, अगेन ब्यूटीफुल फंड. इंडियन एंजल नेटवर्क, यस, डूइंग ग्रेट. सो ये नेम्स अगर आपने नोट करने हैं या साइड लेनी है, आप ले लो. दीज आर द लिंक्स टू गो व्हेन यू नीड योर फंडिंग. Shall I wait if you want to take photograph? Yes. Well, all these sessions are getting recorded and will be available in the YouTube channel of the college. Right? So this entire session will be available to you. Shall we move forward? Yes. Thank you. So, now I'm opening the house. We have good 7 minutes to 12. This is for question answers. आपको कोई भी question पूछना है, you can ask me questions and we will love to answer your queries. And एक game आपको last करा देता हूँ, then I'll move to my seat and you can ask me questions. Can you give me 7 uses of this pen? Anybody? 7 uses of the pen. एक तो लिखना है, उसके बाद 7. कोई 1 is to gift. जो मैक्सिमम मुझे देगा चॉकलेट ले जाएगा. लास्ट चॉकलेट बची है, नहीं तो मैं लेके जाऊँ. पेन फाइट गेम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सेल्फ डिफेंस. Yes, scale भी यूज हो सकता है. It can be anything. Creative. बोलो. Stay new shirts. Yes. और Tickling people. yes. Very creative. और सोचो. Doodling on t-shirts. Doodling on t-shirts. Why not? Yes. और can be used as a bookmark. और right. Sketching can be done. Spilling ink on face. Yes. Or Paperweight. paperweight Carrying the paper. can be used as a fashion also. Yes. Status symbol. Yes. पुराने ज़माने में ना प्लास्टिक के पेन आते थे 2 रुपए के, स्टिक कंपनी के. उसमें ना लोग धागा बांध देते थे और उसके बाद yes. So don't remember. See, polishing is very necessary, but अपने roots मत भूलना. India is very creative. एक word है यहाँ पे जुगाड़. हर चीज़ का एक जुगाड़ है. 7 जुगाड़ आपने इसके बता दिए, मुझे लगता है 10 ही बता दिए होंगे. ठीक है? So same as entrepreneurship. While closing my session, I'll tell you nothing is good, nothing is bad. If you are passionate to do anything, उसका जरिया है, उसका क्रिएटिव सोल्यूशन है, ये याद रखना. ठीक है? कोई आपको कहे कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा. आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए and do it. Thank you guys. Thank you for listening patiently. If you have any queries, you can ask the expert. Or companies that we can support, which are based in the Tri-City, so that we can encourage more people to create startups and maybe open small businesses, or a product that can
go out of this area and become famous all over India or the world. Right. You want to supply to some company, right? No. I was asking, are there any companies or any product that So we I'll can be very frank. What are the basis of the question? Basically, you want to do a startup? Yeah, no, just a general question. just Just a good general question. So there are very good companies in Mohali. Industrial area, we have very good companies. Even अगर आपने एक ई-रिक्शा देखी होगी आजकल चल रही है मयूरी, yes. that has a plant in Mohali itself. Then Swaraj, अगर आप buses देखते हो schools की, Isuzu, they have plants in Mohali. Pancom is there. They need small capacitors, investors, सब कुछ चाहिए आप वो बना सकते हो. Great companies coming up. अपने चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में भी amazing companies. And if you can enter into pharma sector, छोटे-छोटे chemicals आप दे सकते हो. Huge money, 10x, 20x. I have few startups in the industrial area, phase 2 Panchkula, supplying just chemicals to big companies. हमारा नालागढ़ बद्दी पूरा pharma area. Medicines बनती हैं, there are rare drugs. Get them and supply them. I hope it answers. Yes, sir. Please. 40%. They will demand you 40%. उसके नीचे वो investment नहीं देते हैं. एंड अगर उससे ऊपर चाहते हो शुड बी गिव टू देम. नहीं, उसको ऊपर नहीं दे रहे. अगर वो डिमांड करे 40 से ऊपर नहीं दे रहे, बिल्कुल कंट्रोल आपके हाथ से चले जाएगा. What type of grants are available for the new entrepreneurs? So there are good grants available, like agri sector is being supported by the government, then IoT is being supported by the government, there are grants, and startup India website पे आप जाना, so there are grants mentioned किस project के list मिलेगी. जैसे अभी biodiesel के लिए there is a grant, and जो stubble burning चल रही है, there is a grant for that also. There's something called site-based. We are doing it in the department, in manufacturing science department. Great. So how to patent that idea first? So are you using some technology or algorithm for that? We are using handicraft techniques. Using a lot of handicraft techniques. I've identified 13 or 14 of handicraft techniques with a very simple tool that can be used and employed in using our textile waste, and we can create product with the waste. So what we will do is we'll create a process, small process using the hardware, which is not being used anywhere else. Then we can get it patented. So it has to be unique from what is usual. Then it will be a patent. Otherwise, the simple processes which are already going on cannot be patented. So we'll get it patented. We have good patent office also with us. So then we can apply it into our startup, get it registered in Startup India, DIPP, that is Department of Industrial Promotion, and then it will manage. We have one offhand we can play any day. Any more questions? Please. Sir, I'm actually not a business student. So I just wanted to ask, I own a small business. So I just wanted to have your advice. How can we grow a small business to, I really need my brand to be recognized. So can you just help me out in Yes. just letting me know? Very nice question. पहले तो इस क्वेश्चन के लिए ताली बजाओ. सबको One, she is an entrepreneur, right? Maybe small entrepreneur, but entrepreneur is an entrepreneur और आप अपने boss हो. Nobody is your boss. Second, the biggest thing and the biggest research done, किसी ने research की फॉरेन में, उस research को दोबारा करना पड़ा. उसका आंसर ऐसा निकला कि उस research को ही दोबारा करना पड़ा. So business maximum चलता है relations पे. 85% of your business is relations, which we are forgetting. Only 15% is the idea or the product. That research is proven. 2 बारी करी उस बंदे ने. And on good strata, हम relations बनाने भूल चुके हैं. So even if you talk about my business, आपने एकांत एसोसिएट्स आज पहली बार सुना. It is running beautifully only on relations. In 2010, I tell you, I also have a mentor. It is good to have a mentor. Mr. Pratap Agarwal, IDS Infotech owner. If you all know, IDS Infotech is a good company. So he called me at his home. Long story short, so he called me at home and says कि कान मुझे 10 मिनट मिलना तब मैं तुझे बता दूँगा तुमने लाइफ में करना क्या. So I was there in the morning at 6 AM. उनके सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला, कौन हो? मैंने कहा एकांत, आ जाओ बैठो. He gave me a menu. Think about it. At home he has a menu. That is the power of entrepreneur. So कहता सर आप सिलेक्ट करो आपने क्या लेना है. So I ordered for a hazelnut coffee. ठीक है, कॉफ़ी आ गई. वो कहता साहब का अभी अपने पापा के साथ बात करने का टाइम चल रहा है, आधा घंटा. फिर उन्होंने गोल्फ खेलने जाना है, फिर वो आपको मिलेगी.
see the schedule of entrepreneur. Then he comes and gives me the mantra of life. He says, एकांत सबसे रिलेशन बनाना है, नेटवर्किंग करनी है और जुड़ के रहना है. किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, ज़रूर करो, बंदा आपको भूलेगा नहीं कभी. और फिर बाद में बिजनेस आएगा, पैसा तो लास्ट की बात है, अपने आप आएगा. दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, रिलेशंस बनाओ. सो आंसरिंग योर क्वेरी, यू हैव टू ग्रो बिग, मेक रिलेशंस. ये सारी आपकी मार्केट बैठी है. माइंड इंडिया आपकी मार्केट है, और जितना बेचोगे ना उतना कम बिकेगा. बेचना नहीं है, आपने रिलेशन बनाना है, प्रोडक्ट वो अपने आप लेंगे. ठीक है. बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ. वो अपनी स्पीच में ही बोलेंगे कि आगे इसको आप ज़्यादा सीखना चाहते हो तो हमारा इंस्टीट्यूट वहाँ पे है. राइट. कितना टाइम लगता है आपको सबको उसका सच जानने में? सेकेंड्स. सबको सबका सच दिखता है. रिमेंबर इट. People have forgotten this. When they speak, when they pitch, when they talk, they'll say, अपने बारे में बोलते रहेंगे. I am a life coach. I do this. I do this. मुझे ये हो गया, वो हो गया. Don't sell. जितना बेचोगे उतना दूसरा बंदा नहीं खरीदेगा. याद रखना. Let it be an enigma. People अपने आप अपने पास आएंगे. आपने सिर्फ दोस्ती करनी. ठीक है? काम हो जाए. Two parts. First of all, I want to go in the fashion industry. It's highly competitive and very risky. So I want to know, like, do investors really invest in them? Yes. And if yes, can you name some companies in the Yes. Tri-City? So we were talking about Nykaa itself, not in Tri-City, but yes. So Nykaa got funding thrice. Yes. That's a fashion brand, you know. So now they have launched an IPO and is a very big time company now. Fashion industry is booming like anything. No, some investing companies in Tri-City. Yes, like yes. The name you, like the name you use given in the slide, are they open for Yes, investing in these companies? yes. They are open. Any domain they are open. So just they want is traction. आपके पास cash flows कितने आ रहे हैं? So there are valuation methods. उसमें cash flow is used here or discounted cash flow. कि कितना पैसा आ रहा है और liabilities कितनी आपकी जा रही है. उसके बेसिस पे आपकी एक फंडिंग बन जाएगी. जैसे 1 करोड़ बन गया, उस 1 करोड़ में से आपको 20 लाख चाहिए सर. बाकी बड़ा वो आपको धीरे धीरे मिलेगा. उतने में कितनी इक्विटी चाहिए. Thank you so much. Any other question? कभी कोई क्वेश्चन दिमाग में आ जाए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे लिंक्डइन पे डाल देना, एकांत अग्रवाल. बाय चांस नाम यूनिक है, मिल जाएगा आसानी से. डाल देना, आई आंसर. बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई फैमिली, यू आर माई फ्रेंड्स. मैं भी एस डी हूँ, आप भी एस डी हूँ, तो आपके लिए तो एनी टाइम. We are having students and faculty here from the multidisciplinary backgrounds. They all are not the ones from the commerce background, but they all are putting up the questions, and many are keen to ask the same, but I don't know why they are not asking. So thank you so much for this interactive session, and I am sure they must have learned a lot out of it. So I would like to call on stage Dr. Meenu Gupta for the formal vote of thanks. On behalf of the ISC GDDST College Chandigarh, it's my privilege here today to thank Dr. Advocate Ekant Agarwal for sparing his precious time and guiding us for the most important thing, that is the funding. See, lots of students have dropped their idea because they don't know how to raise the fund from the parties, and that is most important and the main issue, main concern for startups. And we are really thankful, sir, and gratitude that you spare your time and guided our students on this relevant topic. Further, I would like to thank Mr. Sarashi and the ISC member for making this event successful. And lastly, I'm failing my duty if I am not able to thank our technical team members, Mr. Manish, Mr. Keshu and Mr. Pradeep, who make this succession and give his technical support throughout the session. And last not the least, I would like to thank the wonderful students for making this session interactive. Thank you so much, sir. Thank you.
for giving a brief view about the ISC which is going on in our college. Just 5 minutes, you come to know how to become a member of that ISC. Please welcome. Good afternoon, students. To get it up. I want to share a few things with you guys. You just had multiple sessions in the last couple of days about entrepreneurship, incubators. So I would like to share a few things that what is this IIC all about? Why are we organizing these talks? Must be now amply clear to you. Basically, we are trying to give you an orientation that if any one of you is not interested in job but want to start up all these things, so these lectures are basically for orientation. Now, what after orientation? Do you just go home, right? Done with the orientation, all oriented minds, what will you do next? Right? Then we become ghosts. No, that is not going to happen. Actually, I just want to put some things. Just switch it off. Where is the scale? Back. Firstly, all these sessions, if you have missed our previous sessions, because it's not possible for for us to capture all the students all the times. So you have got friends. So the idea is that you will disseminate all these things among your friends, right? That there is something called ISC which is going to help you out. So what are our objectives, right? So I will just take a moment here. Just open our web page. Okay, I can reach it. Have created, but it is informative. It is informative, right? So if you have any idea, what you want to do with that idea now? Now you have got motivated. All of you are motivated to do some kind of business. You are very happy now, all zeal. Now what is the next step, right? You need a contact point. So IIC has got this team. So these are some of the members. You can see this is a complete list of members. And these are coordinators basically, and then we have a list of members. So all these members are faculty members, right? So they are from all the disciplines. You can see that we have got a very large array of teachers which are available to you. Whenever you have some kind of thinking like, I want to do something, I have an idea, what to do next. These are your contact points, right? These are IIC members dedicated for all these things. You can get in touch with them, right? And now, once you get in touch with them, now there are something more. So all the activities which we are doing will be listed over here. You can always check that what is coming up next. So we do it in a quarterly basis, right? We do it in a quarterly basis. So you can get all these things, you can have a look, and all these things are available. So there are some kind of celebration activities for which you always, we advertise and we do give cash prizes. So there are always handsome prizes to be won on these themes. Like this was for the previous year. So you can visit us on our, I will just show you that we have a Facebook page where I keep on updating all these things. So you can actually look at all these things. You can see all the events which are going on just 2 days back. All the information is available on this web page, right? So this is a single point. You can actually look at what is going on. What are the upcoming competitions which are being organized by IIC? So normally we go by cash prizes. We don't believe in mementos and all these things. We go by cash, right? So you can put up your ideas in different forms, and you can win. These cash prizes are to be won. Then let me go back. Now, student registration. So there is a column in IIC this is basically a government initiative to which we faculty members are party to it. There are external members. So Saransh sir is also on board with us. So we have members from industry, we have members, different members. You can see their profiles as well.
in the external member list. Right? So there is a long list of people who are on our board. Right? So another thing which I want to show you is that this is a simple registration form. If you have an idea, now what to do with that idea? Yesterday we told you, day before yesterday we told you that we are in a process of setting up incubator in our college. So you will be getting some seed money without any kind of a collaterals or anything. So if you have an idea, we will provide you an infrastructure and all those things. You just have to come up with an idea. So that idea will be evaluated by the experts, right? And the good thing is, if your idea is not mature enough, the experts will help you shape your ideas better, right? So that is the primary function of IIC, that once you are motivated and oriented, then this is the web page and all these things are there, right? Now if you want to just register, there are very few simple questions to be answered. Just this is our form, so you can just enter your basic details, and I have kept it deliberately that this way, that if you have idea, then put it up. If you don't have an idea, even then you can become our member. So then you will get exclusive mails and everything which is coming up, right? So this is our single point of contact with you guys, right? So you will get a chance to interact with all these kind of experts and everything, right? So you can come to us, submit it, right? And now the second part. So once the incubator starts functioning, we will be calling your ideas which are a little more mature for funding. Now if you have got a better idea and more details, then you can go for startup registration form is there. So you can go through this form and fill up this registration form, and we will be putting up our more formal policy in a couple of in this month or so, where we will be evaluating your ideas in timely form, right? Like once a month or once a 2 months, whenever we get some ideas, we will call people and do these things, right? So all these other things are available. So if you just want to be a part of IIC, just scan this code and you will get to this student registration form, right? So all these things are available. Are we now clear that what to do with after orientation, what you have to do? Yes, sir. Right? ऐसा नहीं है कि बस अब बहुत हो गया, अब आगे क्या करना है, आगे का भी बता दिया है आपको. ये आपके लिए ही है. आगे जब आप हमारे पास आओगे तो इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं. आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी हम यहाँ पे उसी अकॉर्डिंगली इसको टेलर करते जाएंगे. ठीक है? ओके? ओके. Thank you. Now a last announcement. In couple of days you will be getting a kind of a news that we are going to conduct National Entrepreneurship Weekend on 16th, 17th and 18th of September tentatively, and there will be a panel of investors which are coming, one part. Second, there are cash prizes to be won, cumulative cash prizes of 1 lakh. So if you have an idea, right, that information will be shared with you in couple of days, but be ready. Be ready for that. I think 1 lakh cash prizes is motivating. you can clap for yourself. Okay, that's it for me, right? I hope I have given you the preview. Rest, you can come and join us anytime. So this form is always open, right? We want that people who have an idea should not wander here and there. Just connect with us. Is that okay? Yes, sir. Okay, thank you so much, and thank you, Cancer, for your time, right? And it was indeed a very, minimalistic way of putting up the things, but keeping the information part intact. That is what I liked about this talk. You shared everything, but in a very simplified way. Thank you so much again on behalf of college, management, and PML Business School, which has always been very supportive to us. Thank you so much, all the students. Thank you. You can clap for yourself.